फ्रेंड्स, अभी तक हमने बातें की थी चैप्टर 6A के पार्ट ए के बारे में, और पार्ट बी में से हमने सेक्शन 80C से लेके सेक्शन 80D और उसके सब सेक्शन तक बातें की थी। उसके बाद पार्ट बी में कुछ सेक्शंस रह गए, पार्ट सी में है, पार्ट CA में है और पार्ट डी में है, जो कि सेक्शन 80 से 80E से लेके 80U तक है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80E से लेके 80U तक की। Section 80E related with the interest paid on education loan for higher studies, and this is available to self also, to spouse also, to children also. It means यदि आपने खुद हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो मिलेगा, बच्चों के लिए भी मिलेगा, और आपके स्पाउस ने भी यदि लोन लिया है उसके लिए तो आप मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने वो इंटरेस्ट एक्चुअली पे किया हुआ हो। ये केवल इंडिविजुअल को ही अवेलेबल है। इसका मतलब HUF में उसके फैमिली मेम्बर यदि कोई लोन लेते हैं तो उसको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। और एक और कंडीशंस हैं इसमें कि ये सुविधाएं आपको अवेलेबल होंगी लोन जब सैंक्शन हुआ उसके 8 साल तक ही। यदि उसके बाद भी लोन चल रहा है आइदर फॉर नॉन रिपेमेंट और फॉर मोर रिपेमेंट पीरियड, 8 साल के बाद आपको अवेलेबल नहीं होगा। 80E ये रिलेटेड है इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। कंडीशंस हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर होना चाहिए, लोन लिमिट शुड नॉट एक्सीड 35 लाख, मैक्सिमम हाउस वैल्यू प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, फर्स्ट यू एग्जॉस्ट द प्रोविजंस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसके बाद ये सेक्शन आप में जो सुविधाएं हैं वो अवेल कर पाएंगे। हालांकि ये सुविधाएं अवेल करने के लिए ये जरूरी है कि लोन लिमिट 35 लाख ही हो और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शुड बी नॉट मोर देन 25 लाख। सो उसके बाद सेक्शन 80EA ये भी इंटरेस्ट लोन ऑन होम लोन है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन है। इट इज फॉर एफोर्डेबल हाउस, ये भी केवल इंडिविजुअल को मिलता है। लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2022, एंड लिमिट इज ₹1,50,000 ओवर एंड एबव सेक्शन 24B, अंडर विच अगेन ₹2 lakh limit is available. The stamp value of house should not be more than 45 lakhs, and here also the SSE must be first time home buyer. Means if somebody are intended to take benefit under section 80EA, उसको मैक्सिमम बेनिफिट जो है 1.5 लाख इस सेक्शन में मिलेंगे, और सेक्शन 20B में जो 2 लाख है वो मिलेंगे। मतलब एक SSE को मैक्सिमम 3,50,000 का डिडक्शन मिल सकता है, 1,50,000 आफ्टर अंडर दिस हेड एंड 2 लाख अंडर सेक्शन 24B. The next one is, it is 80G. 80G section is meant for donation made to specific relief fund and charitable institutions. I again repeat, this section is available for donation made to specified relief fund and charitable institutions, and it is available to all SSE, means individual also, to HUF also. Mode of payment, if it is more than ₹2,000, it must be other than cash mode. It means up to 2,000 you may give in cash, but if you intended to give donation is more than 2,000, then it must be either through check or internet banking or Paytm, whatever it is. And if donation is in kind, no deduction would be available. For availing benefit under this section, the documents required are, when you go on income tax portal and you file to your tax return, and
intended to take benefit of under section 80G, then they will ask you for name of donee, PAN number of donee, address of donee, and how much amount you have collected. These four information they require. Unless you provide these four informations, you will not be able to get benefit under this section. Here, we had talked about the relief, specified relief fund and charitable institutions. There are four types of specified relief fund and charitable institutions, and category is A, B, C, D. In every category, deduction limit is allowed. Under category 1, you will get 100% deduction without any qualifying amount. It means if you have paid 5 lakh to category A, you will get the benefit of rupees 5 lakh without any qualifying limit. Under category B, if you paid 5 lakh under this category, you will get deduction under this section of rupees 2,50,000 only, because 50% deduction is there. Under category C, although deduction is 100% available, but limit is 10% of the adjusted gross total income. I again repeat, under category A, 100% deduction without any limit. If you made donation to category B institutions or charitable institutions, you would get the deductions, 50% of deductions, whatever amount you have donated, out of that 50% the deduction you will get, and there will be no qualifying amount. Under section C, you will get 100% deduction subject to the qualifying amount, and that qualifying amount is 10% of adjusted gross total income. And under category D, there would be 50% deductions subject to 10% of adjusted gross total income. Now the question is, what is gross total income? The gross total income means gross total income reduced by the following 5 hits. And the first one is, whatever deductions available under section 80cc to 80u except 80g, it will be deducted. All exempted income must be reduced. Any capital gain, long-term capital gain, which is available under section 112 and 112a, it should also be reduced. Short-term capital gain, which is available under section 111a, this should also be reduced. And income referred to in sections 115A, 115AB, 115AC, 115AD, which is related to non-resident and foreign companies, this amount should also be reduced. It means, if you remember the steps for calculating the gross total income, we had all 5 heads of income together reduced by the losses, set of losses, and added by the clubbing of incomes, means income of somebody else. After that, we would get gross total income. After that calculation, if you want to avail the benefit under this section, 80G for category C and D category of institutions, then you will have to deduct the deductions available under 80cc to 80u except 80g, exempted income, long-term capital gain, short-term capital gain, and income referred, income related to non-resident and foreign company, और उसका 10%, उसका 50% या 100%, सॉरी इसका 10% आप क्वालिफाई करेंगे उसमें, और ये कैटेगरी डी होगी तो फिर क्या होगा, 50% ऑफ डिडक्शंस और सब्जेक्ट टू 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. इट मीन्स यदि आपने 50,000 डोनेशन दिया कैटेगरी डी में, तो डिडक्शन कितना, 50%, मीन्स
25,000 सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। यदि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 40,000 है तो 40,000 तक ही मिलेगा, और यदि 60,000 है तो आपको 60,000 ही मिलेगा, सॉरी 50,000 ही मिलेगा, नॉट 60,000। अगला सेक्शन है सेक्शन GGC। It is donation by an individual to political parties. Conditions are: it can be made only by an individual. The mode of payment should also be other than cash. Political party must be registered. It is also available if you donate to electoral trust, and there is 100% deduction. Now the third one is, it is GGA, 80 GGA. In GGA, it is related with the donation made to scientific research or rural development institutes, where you will get the 100% deduction. After that, it is 80 GG. It's a very important section. Under this head, it is available to those employee or those businessmen who is staying in a rented house but they are not getting any HRA. But for availing the deduction under this head, the conditions are: the first one, SSC does not receive any HRA. Accommodation is not owned by SSC or minor child or HUF if you are a HUF member. And limit is the list of the following three. The first is 5,000 per month or 25% of total income, or rent paid minus 10% of total income. Whichever is less, that would be the limit for availing the benefit under this section. Now ATTTA. ATTTA is meant for deduction of interest income, but the condition is the SSC must be below 60 years. It is available to both individual and HUF, also available to resident and non-resident. And interest, deduction of interest income, and interest must be on saving fund only, saving fund of the bank and with the post office, and limit is only 10,000. I again repeat, SSC must be of below 60 years of age. It is available to resident, non-resident, individual, HUF, all. Interest income means interest on saving account with all the banks and post office that you have, and limit is 10,000. Now the second section is ATTTB. This is deduction of interest income on deposits. I again repeat, TTA is available on interest income on saving bank account only. ATTTB is available on all deposits including saving banks. Conditions are: age must be, the SSC's age must be 60 years and above. It is available to only individual, only resident. Limit is rupees 50,000. And interest on deposit means interest on recurring deposit, fixed deposit, saving deposit. I again repeat, there is a lot of confusions in between the section ATTTA and TTB. I again repeat, section ATTTA, it is available on interest on saving bank only. Second number, the SSC must be of below 60 years of age. But under section TTB, this deduction is available on interest on all deposits including saving bank.
For example, if a senior citizen has a interest on fixed deposit is 40,000 and interest on saving bank is 12,000, then he is entitled to avail the deduction up to the limit of 50,000. But if SSC is below the age of 60 years, he has no interest on saving bank account, but fixed deposit account has an interest of rupees 20,000. He is not eligible, he is not entitled to get any deduction under section TTA, because under section TTA it is available only on interest on saving bank deposit. Now it is section 80U. Section 80U is available for disabled person. Means if you are disabled, it is self-disabled, not disabled dependent. Self-disabled person. If you are SSC, तो आप अपना जो ले, and unfortunately if you are disabled, then you are entitled to get the benefit under this section. Conditions is at least 40% of disability should be there. यदि आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है तो ये सेक्शन की सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। ये सुविधाएं तभी मिलेंगी जब आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे अधिक है, और जो क्रम से जो 6-7 इलनेस लिखे हुए हैं इसमें आपको मिलेगा सुविधा। इसके अलावा कोई और बीमारी में आज के दिन में नहीं मिलेगा। इसकी लिमिट यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 75,000, सॉरी यदि आपकी डिसेबिलिटी 40% से लेके 80% से कम है तो 75,000, और यदि 80% या उससे अधिक है तो 1,25,000। फ्रेंड्स, हमने डिडक्शन चैप्टर यहाँ पूरा कर दिया। हमने स्टार्ट किया सेक्शन 80A से लेके 80U तक। मैं फिर रिपीट कर दूँ एक बार कि ये डिडक्शंस मेंशन हैं चैप्टर 6A में, जो कि शुरू होता है सेक्शन 80 से 80A से लेके 80U तक। इसके 5 पार्ट हैं। पार्ट ए जो जनरल रूल्स बताता है, बाकी रेस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स में जो भी सुविधाएं, जो भी आपके डिडक्शन अवेलेबल हैं, वो किस तरह से उसको यूज़ किया जाए, उसके यूज़ करके क्या जनरल रूल्स है उसको बताता है। पार्ट बी, सी, CA एंड डी, और डी में 80U में ये फिनिश हो जाता है। सो हमने डिडक्शन पूरे कर दिए। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमें लाइक करें, और यदि आपने मेरा चैनल एस्टोन टैक्स फिन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना ना भूलें, जिससे कि हमें यह समझ में आ सके कि मुझे और फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट करना है। थैंक यू।